I'm going to let all the participants in now. Um, all right, let's start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome all the participants to this 15th session of our career facilitation series. Today's topic is careers in accounting and finance via chartered accountancy pathway. मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारा जो करियर फैसिलिटेशन सीरीज है ये हमने एक साल पहले स्टार्ट की थी और इस हवाले से हमने बहुत सारे करियर्स को कवर किया है अपनी वेबिनार सेशन में, जिस तरह के कंप्यूटर साइंस, मेडिकल, मीडिया साइंसेज, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी एंड मैनी मैनी मोर। और जैसे जैसे हम जमात का फीडबैक लेते हैं इसी तरह से हम अपने इन सेशंस को अरेंज करते हैं एंड वी ऑलवेज ट्राई टू गेट द बेस्ट एक्सपर्ट्स ऑन आवर पैनल। जिस तरह के हमारे साथ आज दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड गेस्ट्स हैं, जिनको मैं कुछ देर में आपको से इंट्रोड्यूस करूंगा। To start with, I'll just try to set some rules. अगर आप देखें तो हमने आप चैट विंडो अवेलेबल है आप लोगों के पास to put your questions through. हम अपने सेशंस में जनरली स्पीकिंग सारे ऑल रेलेवेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट जो ज्वाइन करते हैं उनके पास ये चॉइस होती है कि वो अपने सवालात को चैट विंडो में पुट कर सकते हैं, विच आई विल आस्क द गेस्ट्स इन दी टुवर्ड्स द एंड। और उसके साथ साथ कोई ऐसे कंसर्न्स हैं आप लोगों के वो आप बिल्कुल रेज कर सकते हैं, but I will just request you not to ask personal questions because this is not a personal career counseling session. This is a career facilitation webinar. So, मेरा नाम इमरान भमानी है. I've been with this team for the last 1 year and I'll be hosting all the sessions. I will just quickly introduce our guests today जिन्होंने हमें join किया है. First of all, we have Sehar Tauqeer. She is also a chartered accountant from Pakistan. She's worked with PricewaterhouseCoopers. She's also worked with GlaxoSmithKline in Dubai for 2 years. She was working as closing lead, and she's currently working in Ikea uh, in Switzerland as a business performance analyst. So many welcomes, Seher. Then we have Komal Ali. She's also a chartered accountant by qualification. She's got 10 years of professional experience. She's worked on senior management positions, also with PwC. And then she's ex-head of tax for Daraz and now working as head of tax for Shell Pakistan Limited. So Komal, आपका भी बहुत बहुत खुशामदीद. Thank you. Okay, I'll just start with our basic questions, and I hope we get more participants and we'll get more deeper into the conversation. But first question with Seher,
if you could tell us, and I'm sure it was a long, long time back, but why did you do your chartered accountancy? Yeah, it's a very interesting question. So it's think me again that why did I? So actually, coming from Pakistan, it's a girl does not have that much of years to accomplish or to see what they can. They have limited number of years. So yeah, do studies, but then of course you will have to marry. So I was looking for something that is very quick. Looking to So marry or look do your CA? no, have to marry, right? I mean, this Okay. is the culture. So so it's and I don't I mean want to do something that is kind of quick. So uh, being a chartered accountant was taking 5 years. Comparing with other things, which I'm seeing that if I would be a doctor, then 5 years just to be a doctor, and then I have to be some specialist. Then comparing to other things, also if I would just do the bachelor's, then the 4 years bachelor's will not be that much for to be competent enough. I have to do more 2 years to do the master's. So I mean, from comparing all the possibilities that I was looking at, the shortest one that I could find was the chartered accountancy. That was for 5 years. And then, I mean, it was globally recognized also. So it was considered as being very hard thing to do. So I was like that, okay, yeah, let's try it, how much hard it can be. But because I need to do something which can give me results very fast. So Alhamdulillah, it went well. Then in the inter exams, got some exemptions also, which helped me to do CA much more faster from 5.5 years to 5 years. So yeah, I was like kind of progressing it towards my goal. So that's why, yeah, let's do CA because it can, because then if I would move to any other country also, I mean, it's something that I don't need to do any other further qualifications for it, because chartered accountancy is like from AKEB'P is very, very recognized in the other areas in the Gulf Right. So I countries think also. So great. That's a very honest answer actually, because generally people run away from chartered accountancy. It's not so easy. और 5 साल तो आपने बड़ा माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कर लिया. People get stuck in it for a lot of. अच्छा, I'm just getting this feedback saying video has no voice. I will request all the participants who have joined from also from northern Pakistan that I can hear them clearly. They can hear me. I can also unmute you, Mr. Nadeem, to see because maybe you'll have to, if you're on a laptop, you can restart your PC, or maybe if you are on your cell phone, you can rejoin the conversation. Um, if anybody else has voice issues, if आप बता दें, I'm turning on the reactions. You can also put up a thumbs up if you can still hear us. There's a menu and on Zoom where you can give reactions. So if you can still give us a reaction, I can see a thumbs up. जो हमारे participants हैं, if you can hear us, um, if you can have some thumbs up, ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोगों को आवाज आ रही है, because we've got 17 participants now. Okay, I've got 2 thumbs up. I've got 3, 4, 5. I think okay, that's great. I think 5-6 लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आवाज आ रही है. I'm guessing. Thank you, Sadaf. Thank you, Ahmed Wali. It might be just the internet because we have people from Gilgit, we have people from Ishkoman and the other northern areas. Thank you very much for joining. So yeah, okay. Same question for you, Komal. I'm sure it was a long time back, but what was your reason to do the chartered accountancy? उस वक्त ये माना जाता था कि ये आसान काम नहीं होता. Again, Imran, a very interesting story for on my side as well. So I personally wanted to be a dentist initially, and I was a medical student till my class 8 studies. And suddenly I got a sponsorship for my A levels and O levels. So I had to start my O levels in accountancy and finance and business.
So I made a choice, though my parents were not happy though, but I took it as a challenge. And then I decided to be a chartered accountant because I really thought that chartered accounting is all about numbers and calculations, and I was really good at maths. But trust me, it is not just maths, mathematics and calculation is much more than that. So we'll move forward and I'll tell you how CA studies are. But yeah, it really went well over those years. I completed my qualification within the articleship. And as Sehar mentioned, I really don't know, but I did marry in between my articleship before my final examination. So Me it too. was hard, but it was good as well. So yeah, it wasn't a first choice, but I'm glad I chose chartered accountancy as a field. I didn't regret it at all. Excellent. Excellent. I think जो शहर ने बात की वो it kind of resonates with most women now as well. Of course, I think for men is also pretty much the same. ऐसा नहीं कि pressures नहीं होते. Of course, but for women it's like a two-way street कि भाई किस तरफ जाना है. मतलब अब तो शुक्र है कि वो you can do it parallel. Like what you did was amazing because you were studying, you got married in the middle, you continued it. आजकल के जमाने में I'm sure in Karachi, Pakistan and all the other areas as well, कहा जाता है लड़कियों को स्पेशली कि पहले पढ़ाई खत्म कर लो, ठीक है ना. सीए बन करना है, नर्सिंग करनी है, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू वांट टू डू अ सिंपल वनीला एमबीए, खत्म कर लो. यू विल बी 26 27, इट डजंट मैटर नाउ डेज. एंड स्पेशली बिकॉज बैचलर्स 4 साल, फिर अब जो मास्टर्स की यूनिवर्सिटीज है दे आस्क यू टू वर्क फॉर 2 years, then you have to do your master, so it's actually 8 years. I think now everybody accepted the fact that you need to finish your education. So I'm really glad you guys did your CA now and you're both excelling in your field. Second question, Komal, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ that क्या overview अगर आप हमें देना चाहें कि what are the different career paths now within accounting and finance? Because see, when you say chartered accountancy, it is accountancy of a certain kind. Like you could have even cost and management accountancy, right? But this is chartered accountancy. But when you say accounting, एक और उसके साथ लिंक हो जाता है डिपार्टमेंट कह लें या फील्ड कह लें, which is finance, which run together nowadays. तो क्या करियर पाथवेज हैं और क्या ओवरव्यू देंगे आप हमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के सेक्शन का? So see, there are many ways that you can pursue your finance qualifications. And उस टाइम पे तो इतनी awareness नहीं थी जब हमने start किया था CA. It was just CA और MBA और BBA. और अब आप देखें काफी आपके बाहर की qualifications की भी reach out होने लगी है पाकिस्तान के अंदर. You can easily register for ICAW, ACCAs काफी होने लगे हैं अब यहाँ पर. फिर आपके पास सिमा है, जैसे आपने mention किया, management accountancy है. Then you have financial analyst, CFA कर सकते हैं. There are many more. You just need to go outside on website, talk to people and find out more where your interest is. So पहले ये होता था कि सिर्फ CA करना है या डॉक्टर बनना है या फिर ECC करना है, ज्यादा MBA कर लेना है, BBA करना है, but there are many more opportunities now there in outside the world. So within Pakistan करना है, there's available, you can go to their website, register yourself, study here, you can give papers online. There are many, maybe Sehar can add too. No, I think, yeah. So Sehar, same question to you. What are the pathways, different career pathways within accounting and finance? I think Komal has mentioned a lot about Right. different things. So, I mean, you can become you actually broaden up while you do the finance. So I mean, there are so many accounting fields that you can go to. So I mean, it's the management accounting, it's just the financial accountant, it's the tax accountant. So because this chartered accountancy profession gives you a very detailed knowledge about all of these professions. Audit, you can also go for audit. So then it depends up to you that, okay, this is something that interests me the most, and those pathway you can select. So example, for if you even if you want to go for immigration, then thousands of opportunities come up for you because the finance is not just the finance only, it's much more now. So it's not Correct. only accounting and just one financial accounting like that. So let's say in the finance and accounting department, जो chartered accountant का जो एक काम है, and then you have tax accountancy का एक अलग काम है, finance accounting है और cost and management. तो ये सब चीजें CA में cover हो जाती हैं while you are studying? Yes, I think Okay. I can say yes. I mean, Komal can, Excellent. yeah, because it will give you
the ground knowledge of all these things and the detailed knowledge of some more subjects. But when you go for the final exams, everything is covered, and then it makes you enable that whatever you want to go for, you can go for that. So okay, so that is an excellent answer. You see, जो मेरी understanding बिल्कुल नाकिस सी understanding है, और शायद उस ज़माने में भी, because I didn't want to do a CA, I thought it was too difficult. जो मेरे दोस्तों ने जिन्होंने CA किया, वो एक बात करते थे कि वी आर विद एन ऑडिट फर्म, और आज भी आप देखेंगे कि जितने भी एक्सटर्नल ऑडिट फर्म्स हैं वो सीएस को ही एम्प्लॉय करते हैं। तो क्या ये ऑडिटिंग वाला जो पार्ट है, ये क्या बिल्कुल ही स्टिकर चिपक गया है सीएस के साथ, या ऐसा नहीं है? I would say now it's changing, and now it's changing a lot. So even now, ICAP is offering the articleships and everything in the industry. So अब उन्होंने भी जो है वो कम कर दिया है कि आप ऑडिट फर्म्स में ही सिर्फ अपनी आर्टिकलशिप करो. So first उन्होंने उनके लिए भी एक पेज खोल दिया जो कि आर्टिकलशिप में स्टूडेंट्स हैं, that if you want to go outside the firms, outside the audit firms, you can go for any MNC. So now Unilever and everything, they are also offering the articleships to students. Excellent. They So can go for that one too. excellent. So Komal, can you explain a little bit articleship का मतलब क्या है? Because जिस तरह से हमारे यहाँ सारी जमात है, और मैं भी इतना ही समझता हूँ कि मुझे एक चीज समझ में आती है कि इंटर्नशिप, क्योंकि वो हर बंदा करता है, हर बच्चा ग्रेड 12, 11, 12, 13 में कॉलेजेस में मैंडेट करते हैं कि आपने इंटर्नशिप करनी है. बट ये जो लफ्ज है आर्टिकलशिप, हाउ डज इट, इज इट स्पेसिफिक टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी? Yeah, just before jumping into your question, I wanted to make this understand कि जो CA का पूरा मॉड्यूल होता है एग्जामिनेशन का, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, it has a bit of a mathematics, legal base में आता है. So we have corporate legal laws as well, economics होती है इसके अंदर थोड़ी सी, थोड़ा मैनेजमेंट फाइनेंस का होता है, बिजनेस फाइनेंस का होता है. तो you get a bit of everything as Sehar mentioned. So auditor जब जाता है ऑडिट करने के लिए, clients they need a background, professional experiences or knowledge at least इन सबको टेस्ट कर सके कंपनी के अंदर. That's where I think CAs are being preferred when it comes to audit. But when you do ACCAs, and now people are coming from ACC background as well. Coming to your question, articleship, so it's a mandatory given by ICAP that one has to complete their foundation papers. उसमें शायद 2 साल के आपके फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के पेपर्स होते हैं. थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया हमारे जमाने से पेपर्स का, और उसके बाद जब आप अपनी फाइनल स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं, फाइनल पेपर्स के अंदर जाते हैं, तो आपने एक मैंडेटरी आर्टिकलशिप करनी होती है जो 3.5-4 साल के बीच में होती है. उसमें आपने मॉड्यूल ई और एफ, और अब 2 और लेवल ऐड हो गए हैं उसके अंदर, रिसर्च टाइप पेपर्स ऐड कर दिए उन्होंने, तो वो भी आपको देने होते हैं उसके अंदर. तो इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर टू टेंड टू लर्न हाउ एक्चुअली ऑडिट एक्सपर्टीज वर्क इनटू द फील्ड. क्योंकि सिर्फ पढ़ाई तो आपको सिर्फ थियोरेटिकल सिखाएगी, लेकिन जब आप उस सबको अप्लाई करोगे अपनी जिंदगी के अंदर, तो उसकी समझिए प्री प्रिपरेशन होती है, बिकॉज बिफोर यू बिकम एक्चुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड गो इनटू द इंडस्ट्री वेयर यू आर एक्चुअली डूइंग वर्क फॉर योर क्लाइंट्स आइदर और योर company itself. So it's a bit of an initial experience ICAP wanted to give to their students. You are muted, Imran. Sorry, I'm sorry. So ये तो ICAP स्पेसिफिक बात हो गई कि ICAP एक ऐसा इदारा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान में. I don't know, I don't have knowledge, maybe if there is some other institute as well, या अभी तक नहीं है. But जिस तरह से आपने कहा कि ACCA है, और I think there are some other institutions as well जो they're offering certain other kind of certifications जिनके थ्रू भी फाइनेंस और अकाउंटिंग की फील्ड में जाया जा सकता है. So, Komal, just continuing this, CA और ACC के अलावा भी कोई ऐसी स्किल्स और सर्टिफिकेशंस, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हो अभी, या लोकल सर्टिफिकेशंस हो, कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशंस होती हैं जिससे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में जाया जा सकता है? एक तो हमने कहा CA, एक हमने कहा ACCA. व्हाट एल्स इज देयर? I think first, a person who wanted to be a finance professional, at least एक benchmark होना चाहिए, starting point, that you need to be do your bachelor's. Even in CA, लोग सोचते हैं कि हम bachelor's ना करें, but I generally personally feel that आपके पास bachelor's की डिग्री होनी चाहिए, BCom की या BBA की, because you never know how your CA gonna work around. किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को ज़्यादा भी लग जाते हैं, तो at least you need to have a bachelor's degree in hand. फिर BBA और MBA का साइड होता है आपके पास, then you have ACC as you mentioned,
CA itself is a broader qualification. Then as mentioned earlier, उसके अलावा आपके पास CIA होता है, internal audit की certification होती है. If you want to stick around auditing, CFA होता है आपके पास financial analysis का, जिसके अंदर investment portfolio और finance analysis की चीजें आ जाती है. इसके अलावा आपके पास टैक्स एक्सपर्टीज आ जाती है. आजकल ऐसी बहुत सी यूके की क्वालिफिकेशन है जिसमें यू कैन टेक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टैक्सेशन इटसेल्फ, जो यूके की जो कुछ यूनिवर्सिटीज है जो अप्लाई करती है. one of them is also अलावा CPA. ICAEW भी है. Yeah. CPA is a kind of a chartered accountancy for Australia, Canada, and USA. So they call it as a CPA, certified professional in accountancy, I think. Public accountancy. Right. Then you have ICAEW जो England and Wales offer करता है. तो as I mentioned earlier, बहुत सारी qualification अब open हो गई है outside jurisdiction of their own countries. So you can simply register yourself in Pakistan, give online papers, register yourself here only, and you can work around it. मतलब जिस जमाने की if you talk about 15-20 years back, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी यही की ऐसी फील्ड होती थी जिसमें अगर आप कर लें तो देन यू कैन गो इनटू अकाउंटिंग. अब जैसे हमने अभी गिनी है तो इट कुड बी रियली लाइक 3, 4, 5, 7 तक मौजूद हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं जो आप पाकिस्तान में बैठ के नहीं कर सकते. Am I correct? Exactly. The only hurdle here is कि उस जमाने में भी होता था, I'm sure अभी भी होता होगा, कि people generally think CA is cheaper than other qualifications. ACCA की मेंबरशिप भी आपको थोड़ी सी पाउंड से पे करनी पड़ती है. दूसरी भी क्वालिफिकेशंस जो होती हैं वो आपको फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में पे करनी पड़ती है. So it's kind of a bit cheaper when you talk about chartered accountancy. राइट. आई थिंक हमने जो लास्ट वेबिनार किया था वो लास्ट मंथ वो ACCA के ऊपर था, एंड वी हैड अ वेरी प्रोफेशनल कमिंग ऑन फ्रॉम ACCA इंस्टीट्यूट इटसेल्फ. एक उन्होंने भी यही बताया कि उन्होंने अब फीस लोकल कर दी है पाकिस्तानी इसके लिए, रुपीज में लेते हैं वो, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पेमेंट्स कर सकें. अब देखिए, जिस तरह से एक सवाल आया है कि ACCA और CA का डिफरेंस क्या है. आप दो एनीबडी, कोमल या सहर, आप सवाल को लेना चाहें अगर. What is the I think exact difference between AC? Yeah, so basic difference is एक आपकी प्रोफेशनल बॉडी है पाकिस्तान की itself जो सर्टिफाई करती है आपको इन द फील्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. और ACCA जो है वो कैम्ब्रिज और यूके की क्वालिफिकेशन है. एंड आई थिंक शहर कैन ऐड दे ऑफर बोथ टाइप ऑफ लॉस, क्योंकि अभी जो बेसिक लॉस पढ़ाए जाते हैं ACCA के सब्जेक्ट्स के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर, वो यूके के होते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के होते हैं. That's kind of one basic difference I see in terms of professional body and the subjects they offer. मेरा तो नहीं ख्याल कोई ज्यादा डिफरेंस है दोनों के करिकुलम में. But yes, if you do ACCA, then it works around in Pakistan as well, and in UK is recognized as well. But when it comes to CA, it is recognized in Pakistan and to certain extent other countries as well. पर जैसे आप US में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, तो then you then need to take a equivalency for CPA, Australia, Canada, and USA. Okay, I got your point. So CA is basically local, but you can always upgrade it, take future and take global certificate as well. अच्छा, एक बड़ा basic सवाल आया है. सहर, अगर आप if you want to answer this, it says CA के एग्जाम्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं और डर लगता है कितने साल लग जाते हैं. उस जमाने में तो it was really difficult. Do you think they are really very difficult or it's just a myth? I think it's a myth. I mean, the life is like that. So, I mean, we cannot escape it. So, it will not be like how we used to answer the questions before. So, I mean, your mind needs to be developed in this way that it's not rote learning. It's kind of something can appear from anything, but then you have your mind to work like this, that you can answer those questions. And most importantly, I think CA questions, sometimes it's kind of your stress test also. So in the professional environment also, sometimes you get questions which you don't understand. I mean, it's not every time that you understand all the questions when you are being in any position. So you have to learn that, okay, how should I go around with this kind of situations? How can I be out of my comfort zone and think that how the situation looks like? So, and how we can answer those questions. So, I mean, it will not going to be straightforward,
questions, but sometimes it's there just to make you think and not so that you will not get kind of being in panic to answer the remaining questions, because it's just the 50 marks that you have to score. So I mean, it's just the CA profession, and 50 pass and no other things available, no benchmarking and everything. So you are chartered accountant equal to anyone else. So एक्सीलेंट, दैट्स अ वंडरफुल आंसर। और जिस तरह से लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि सीए करके क्या हम बाहर काम कर सकते हैं, तो जिस तरह कोमल ने बताया कि यू हैव टू, बिकॉज़ सीए इज फॉर पाकिस्तान, इज एन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, बट उसको इक्विवेलेंसी आप ले सकते हैं if you're in कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यू हैव टू डू सम मोर पेपर्स, और यू कैन डू योर एसीसीए, या अगर आप सीएफए करने जाते हैं तो भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पशन मिल जाती हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की, एंड देन यू कैन डू अ सर्टेन मोर एग्जाम्स टू डू योर सीएफए। सो आई वुड से, मुझे ऐसा लग रहा है सहर एंड कोमल, कि आजकल के जमाने में कोई एक सर्टिफिकेट या डिग्री काफी नहीं है। इसका मतलब आपने सीए कर लिया, उसके बाद थोड़े अरसे बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि यू कुड बिकम रिडंडेंट और यू कुड बिकम आउटडेटेड। तो मैंने बहुत सारे लोग अब देखे हैं, और आप ये जिस तरह से हमने इतने सारे नोट भी किए, सीएफए, सीआईए, ये तो बिल्कुल ऐसे एब्रीविएशंस हो गए हैं जो लोग अपने नामों के साथ लगा लेते हैं, जिस तरह से पहले लगाया करते थे कि डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल बड़ा एक बड़ी चीज मानी जाती है, या इंजीनियर किसी ने लगा दिए, तो अब ये आगे लगाते हैं सीए, एसीसीए, सीपीए। शायद बहुत सारे लोगों को इनका मतलब भी नहीं, लेकिन यस, आई हैव सीन मेनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स जिसमें बहुत सारी सी से स्टार्ट होने वाली जो है वो सर्टिफिकेशंस उनके पास होती है। सो आई थिंक दैट आंसर्स वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे सदफ हुसैनी ने पूछा हुआ था। डेफिनेटली एसीसीए करने के बाद आप अब्रॉड प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका सवाल भी यही है। सो गोइंग फॉरवर्ड सहर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात आ रही है यहाँ पर, एक सवाल है दैट how important is practical experience and internships for somebody entering into accounting and finance? For example, CA कर लिया, CFA कर लिया, ACCA, whatever, right? But then what? How important are internships and practical experience for getting into this field? I mean, it's a lot of importance of that, because I mean, till the time you don't know how to apply that knowledge which you have gained, you will not going to achieve anything. So it's very important for your inner satisfaction also, that you see that, okay, the things that I have learned, I am applying that, and it's the way the business and the firms and companies work. So it needs to be applied for you to grow and for the business to grow. So otherwise you will not get an opportunity to see that how the business and everything is working. So these internships and articleships is providing you an opportunity to learn and to analyze that, okay, yes, here I can support, and here are the things that I need to develop in myself. So, and this is something which we can only get by getting the practical experience. Otherwise we will be just getting an education, but if we are not applying, then what's the use of that knowledge? I mean, because But so before that, like before you join an organization, say for example like CA कर लिया, ACCA, so then companies offer you like कोई management trainee start करते हैं, कोई officers start करते हैं, उससे पहले कितना जरूरी है कि क्या 2 महीने की इंटर्नशिप काफी है, क्या 1 साल, जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, इज इट काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप कि जहां पर आप ऑडिट फर्म के साथ यू नॉट मेकिंग मच मनी, बट दे आर डिप्लॉइंग यू इन कंपनीज जहां पर आप ये सब सीख रहे होते हैं? यस, बिल्कुल। और यही सब हमें एक्चुअल में कहा जाए तो एग्जाम में भी हेल्प करती है। अगर आप आर्टिकलशिप को सिर्फ आर्टिकलशिप के हद तक ले रहे हैं, लेकिन अगर if sometimes question comes in the exam which based on the accounting, some accounting procedure and some accounting laws and some audit procedures, then all the things that you have learned at your client will help you to answer those questions even in the exam. So it could benefit you in both ways, getting you a practical experience of what the life would be after you get those qualifications, and then it would also help you to answer some of the exam questions. So राइट, it's सो इज very, इट very ट्रू कि beneficial. ऐसा भी होता होगा कि कोई आर्टिकलशिप आप कर रहे हैं एंड यू आर इन अ फर्म, यू आर सिटिंग देयर 9 to 9, और दरमियान में ऐसा मौका आ जाता है कि आपको किताब खोल के वापस देखना पड़ता है कि यार मैंने जो सीखा था, हाउ एम आई अप्लाइंग इट हियर, हाउ व्हाट डज इट से इन द बुक, क्योंकि टैक्स प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बड़े फिक्स्ड होते हैं, एम आई करेक्ट? Yes.
Yes, of Okay. course, ऐसा मौका आता है हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग की बुक्स, IFRS की बुक्स, सबकी टैक्स की बुक्स सब पर रखी होती हैं, and then sometimes if we want and if we have to refer if someone does not agree with our opinion also, because Right. it's black and white, but still we have some opinions. It's something that can argue that no, it's something like this, it's like that. So, and it's not all on one page. So sometimes it's linked to Yes. any other thing, then other thing. So I mean, we have discussions that no, this should be the accounting treatment, and then we have some discussions around with the management that we think that it should be the treatment, and then we consult anyone else, something like that. So it's, yes, we refer the books and everything, and knowledge that is there in the books in order to So, arrive at a conclusion. thank you. So, Komal, a follow-up question to you, and I think this is a very practical experience. Very practical question. Ke you're in Shell Pakistan now, and you worked in many organizations before. जो किताबी पढ़ाई होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते वक्त या ACCA करते वक्त, कितने परसेंटेज वो वाकई में अप्लाई होती है व्हेन यू आर इन अ अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट हैं या CFO हैं या टैक्स अकाउंटेंट हैं, हाउ मच डज इट रियली अप्लाई, और कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या डिसीजन मेकिंग काम आती है? बहुत अप्लाई होती है, बिकॉज एज मैं मेंशन कि हम लोग जैसे सहर ने मेंशन किया, IFRS हम पढ़ते हैं CA की पढ़ाई करते वक्त, वी हैव टैक्स लॉज, वी हैव कंपनी सेक्रेटरियल लॉज एंड व्हाट नॉट, हर तरह का लॉ हम उसमें पढ़ रहे होते हैं, NBFC, बैंकिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ करिकुलम। अब उसका एप्लीकेशन जब आपने अपने क्लाइंट पे आर्टिकल्स के दरमियान देखा होता है, एंड व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू द फील्ड, यू काइंड ऑफ कोरिलेट थिंग्स कि मैंने अपने क्लाइंट पे ये किया था, अपने क्लाइंट पे ये किया था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द नॉलेज एंड ग्रेस्प व्हेन यू आर इन द आर्टिकल्स मोड, क्योंकि अगर आप उसको एक बहुत ही ऐसे अनलिनियंट वे में ले लेंगे, तो जब एक्चुअली फील्ड में उतरेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आती है कि अचानक से क्या हो गया, और फिर वो मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव होती है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर दैट यू रियली नीड टू परफॉर्म वेरी वेल to proceed further. And also, somebody asked about the difficulty of CA examinations. I would really like to give a tip that considering the passing benchmark of AKEB'P over the years, लोगों को लगता है कि बहुत difficult है, लोग pass नहीं कर पाते. But you need to be very focused. You need to understand that it's kind of a professional qualification which will give you a very holistic kind of knowledge when you so that you when you go into the field आप perform कर सके. और क्योंकि companies और being a chartered accountant आपके ऊपर responsibility audit करने की, you certified the company's reports as well. तो वो पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोकस होके करेंगे तो लोग कर लेंगे। एंड आई बीइंग अ पार्ट ऑफ AKEB'P एग्जामिनर बोर्ड एज वेल फॉर सम इयर्स, आई हैव चेक्ड द पेपर्स। ट्रस्ट मी, AKEB'P कभी नहीं चाहता कि लोग फेल हो जाएं। दे पुट अ वेरी हार्ट एंड सोल, द एग्जामिनर्स को बोला जाता है कि आप जितना हो सके उस हद तक बच्चे को पास करने की कोशिश करें, जस्ट द वे यू गिविंग द एग्जामिनेशंस, हाउ यू स्टडी। एंड एज आई मेंशन, ओवर द इयर्स हमारे टाइम पे बहुत थियोरेटिकल था पेपर, ओपन बुक पॉलिसीज नहीं थी। अब ओपन बुक पॉलिसीज आ गई हैं काफी सब्जेक्ट्स के अंदर, and the paper is more kind of a practical implication rather than application, rather than having the rote learning kind of answers. So this is a great opportunity that you have the book in front of you, and you can go back to see the answers, at least the calculations, and then apply the knowledge in your paper. So then, okay, then that's an excellent answer. So how would you say in today's world, जब इतनी सारी certifications global भी available हैं, online भी हैं, और ICAP has to also stay relevant, because अब ACC आ गया, CIMA आ गया, CFA आ गया, CA, तो उनको भी महसूस हुआ होगा कि अगर हमने बच्चों को इतना मुश्किल कर दिया कि 10 में से सिर्फ 3 बच्चे हम पास कर रहे हैं और बाकी फेल करके वो लैप्स रिलैप्स करके वापस बच्चे, इफ इफ अ चाइल्ड क्रॉसेस अ सर्टेन एज, फिर वो वापस भी नहीं आएगा, वो कहेगा यार मैं तो, आई मीन आई एम डन। एंड ऑफ कोर्स अब तो जैसी बात है, सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छा, हजारों इन्फ्लुएंसर्स ये कहते रहते हैं कि ड्रॉप आउट करें यूनिवर्सिटी से, एंड आई डिड दिस, आई डिड दैट, इफ यू वांट टू मेक मनी यू डोंट नीड टू स्टडी। इस नोशन को लेते हुए क्या एडवांटेजेस हैं आज भी सीए के, कि हम अपने बच्चे को कह सकें कि बेटा, you if you have a good number crunching mind, if you're a left brain or a right brain, I don't know how it works, but do CA and not other certifications, किस तरह से हम convince कर सकते हैं? Acha, I have a very different kind of point of view. I've seen people
starting CA with me just because of the fact कि उनका कहीं और एडमिशन, मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, एंड लुकिंग एट द फीस स्ट्रक्चर अदर देन एज कम्पेयर टू अदर सर्टिफिकेशन, पीपल प्रेफर टू ज्वाइन CA वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली, क्योंकि उसके जो टेस्टिंग क्राइटेरिया है एंट्री लेवल पे वो भी काफी सिंपल है. एंड आई हैव वेरी डिसअपॉइंटिंग रिमार्क ऑन दैट कि जिस तरह से हर इंस्टीट्यूशन के, यूनिवर्सिटीज के एंट्री लेवल डिफिकल्ट होते हैं ताकि वो एक क्रिस्प और अच्छी लोगों की एडमिशंस हो. CA में ऐसा नहीं है. तो आई हैव सीन पीपल कमिंग इन दिस फील्ड जस्ट बिकॉज दे डिडंट फाइंड एनी एडमिशन इन अदर यूनिवर्सिटीज. तो पहले तो ये टिप है कि ऐसा ना करें. जिसका फोकस हो, जो समझता है कि मुझे इस फील्ड में आना है अपने पैशन की वजह से, दे शुड हैव जॉइन दिस फील्ड. क्योंकि मुझे पर्सनली भी ऐसा फील होता है कि मैंने देखा है कि जो लोग मेडिकल करना चाह रहे थे लेकिन दे एंडेड अप डूइंग CA, दे लेफ्ट आउट वेरी वेरी इजीली, वेरी क्विकली, दे डिडंट कंप्लीट देयर CA. तो पहला तो ये है कि यू नीड टू हैव पैशन ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. किस तरह से, सही है कोई बहुत जीनियस होता है कर लेता है CA, लेकिन अगर वो पैशन नहीं होता तो यू कांट कंटिन्यू इन द इंडस्ट्री लाइक दैट. कभी ना कभी यू फील दैट आई एम जस्ट बैकिंग बियॉन्ड माई पैशन, और फिर शायद वो छोड़ देता है, वो क्वालिफिकेशन लेकर भी छोड़ देता है उस फील्ड को. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू. और आजकल इतनी सारी फील्ड्स ओपन हो गई हैं, तो आई थिंक बच्चों को ये देना चाहिए मौका कि वो अपनी फील्ड खुद चूज कर सके. नहीं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. क्योंकि आजकल के जमाने में तो अगर आप टेक्नोलॉजी की सिर्फ बात कर ले तो उसी के अंदर 20 फील्ड्स आ गई हैं. हेल्थ के अंदर बात करें तो उसके अंदर 20 फील्ड्स आ गई हैं. सो इवन मेडिकल में इट्स अनबिलीवेबल. सिर्फ मेडिकल फील्ड डॉक्टर बनना नहीं है, अब तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. सो हाउ डज वन नो, हाउ डू आई नो कि CA इज फॉर मी, या फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी की जो फील्ड है इट्स फॉर मी? कैसे क्लास 9, 10th, 11th में मुझे ये अंदाजा हो? क्या अगर मैं इकोनॉमिक्स में अच्छा हूं तो मैं ये समझूं कि मुझे CA करना चाहिए? क्या मुझे मैथमेटिक्स में अगर मैं अच्छा हूं, क्या मैं एनालिटिकल हूं इसलिए मुझे, हाउ डू आई नो? या सो आई थिंक स्टूडेंट्स एट वेरी अर्ली एज, वो जमाना गया कि आप पहले मैट्रिक कर लें इंजीनियरिंग में और साइंस में, और फिर डिसाइड करें इंटर लेवल पे या आफ्टर इंटर कि आपको क्या करना है. स्टूडेंट्स नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर प्रोफेशंस, क्या लेने हैं आगे अपनी जिंदगी में एट अ वेरी अर्ली एज. मेरा ख्याल है 7-8 में आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट साइंस की तरफ है. इवन आई टॉक अबाउट माई डॉटर, शी इज 9 years old, शी नाउ इज वेरी कीन टू टेक अप साइंस रोल. चेंज हो सकता है, हम्म. लेकिन एटलीस्ट बच्चों को इंकरेज करें कि वो बात करें अपने इंटरेस्ट के बारे में. तो वो बच्चा खुद फील करने लगता है. यू जस्ट नीड टू आस्क एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर फीलिंग्स एंड व्हाट अबाउट देयर परसुएशंस. फिर उनका, मेरा ख्याल है जैसे आप ये करवा रहे हैं अभी कम्युनिटी लेवल के ऊपर डिस्कशंस, ऐसी लोगों को अटेंड करनी चाहिए टू गेट नो अबाउट द फील्ड इटसेल्फ. जब हमने स्टार्ट किया था कोई नहीं था बताने के लिए CA के अंदर क्या क्या था. एज आई टोल्ड, मुझे लगता है सिर्फ कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, आई कैन डू इट. लेट मोर, there is much more than mathematics in the field of chartered accounting. Laws पढ़ने पड़े आपको, economics पढ़नी पड़ी. economics was never my favorite subject, लेकिन वो भी आपको पढ़ना पड़ा. तो आपको पहले जब भी आप कोई फील्ड के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, अभी गूगल अवेलेबल है, इंटरनेट की दुनिया है ये, टेंड टू हैव रिसर्च अराउंड इट कि MBA है तो MBA में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं. टॉक टू पीपल, LinkedIn is there, WhatsApp groups are there, your friends are there. So I think students and parents as well should make their kids available to such kind of discussions generally. तो उससे काफी अंदाजा हो जाता है. एंड विद इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी जैसे हमने बात की कि एक फील्ड के अंदर बहुत सारी सब फील्ड्स है, तो विद इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कौन सी स्पेशलाइज्ड एरियाज ऐसे आ चुके हैं जिन जो अभी स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है? आई थिंक आपके चार्ट अकाउंटेंसी की हम बात कर लें तो काफी कुछ अब ब्रॉडर एक्सपेक्ट में ना बहुत ही वाइड हो गया है. व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई नेवर थॉट टू बी अ टैक्स स्पेशलिस्ट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ माई करियर. जब मैंने फिर स्टार्ट किया अपना करियर में PwC कंसल्टेंसी इन टैक्स, आई जस्ट वांटेड टू पार्क माई सेल्फ फॉर अनदर 1 year कि थोड़ा टाइम स्पेंड करके और फिर मैं कहीं और निकल जाऊंगी इंडस्ट्री के अंदर. बट आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग दैट प्रैक्टिस. I got to know that tax is a very different kind of discipline. बुक्स में आप पढ़ लेते हैं, अप्लाई भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं क्योंकि आर्टिकल्स में टैक्स का पोर्शन एक जॉब इंचार्ज को दिया जाता है, 6 months से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको रियली पता नहीं चलता है टैक्स के बारे में. जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चलता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है. यू नीड टू स्पेशलाइज इन दैट. तो टैक्स की एक फील्ड है जहाँ पे यू कैन स्पेशलाइज. देन अगेन यू हैव ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जो आपको एक्सटर्नल ऑडिट में पूरा 4 साल सिखाया जाता है.
उसके अलावा आई रियली वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि आप अकाउंटेंसी और फाइनेंस की चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आपने सिर्फ फाइनेंस में काम करना है. आई हैव सीन पीपल इन माय ओन कंपनी हु हैव मूव फ्रॉम फाइनेंस रोल टू बिजनेस रोल, मार्केटिंग, सप्लाई चेन. हमारा जो लुब्रिकेंट्स का बिजनेस दैट्स बीन हेड बाय वन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो जाएंगे फाइनेंस के रोल्स में या यू एंड अप रीचिंग ओनली टू द सीएफओ लेवल. There are a lot more things, lot more opportunities in the field. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझा जाता है कि ऑल राउंडर है, उसको जो पकड़ाएंगे वो कर लेगा. तो दैट्स वेरी ट्रू. सप्लाई चेन है, मार्केटिंग है, बिजनेस में सब जगह मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को काम करते हुए देखा है. यू कैन स्पेशलाइज इन एनीथिंग यू वांट. So actually you can add up. For example, आपकी बात ने बिल्कुल सही बात की. इस तरह इंजीनियर्स जो होते हैं वो भी एमबीए कर लेते हैं कि चले हमें दोनों चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा, बिकॉज उस जमाने में इंजीनियर्स को शायद मैनेजमेंट के कोर्सेज नहीं कराए जाते थे और यही लगता था कि इंजीनियर्स विल ऑलवेज बी बिहाइंड द बिजनेस पीपल. लेकिन अब तो जो फील्ड्स हैं उसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इतने आगे आ गई है कि लोग बिजनेस की चीज़ें भी. तो इसी तरह से अगर आपने सीए कर लिया है और बिजनेस साइड में जाना चाहते हैं, उसके लिए हो सकता है कि शायद मे बी some few more courses in marketing or few more courses in technology कर लिए जाए तो then you can join those departments as well. अच्छा, इसका again because हमने टेक्नोलॉजी की बात स्टार्ट की है तो सहर, I have a question for you. What is the role of technology and data analytics in modern accounting and finance these days? I think it's playing a very important role nowadays because I mean the finance itself, as you mentioned previously also and Komal also, cannot play a major role in having a wonderful career for you in the future. So finance need to be combined with something now. So is it either finance with business knowledge, finance with technology, or something needs to be there. For example, in my current role also with finance, I need to learn some coding, that how the ClickSense and these kind of apps works and how I can use it for my analysis. So I mean, it's something that needs to be combined and with the business knowledge that how the business works. And now it's the technological world. AI is making so many things, and now I mean it's accounting and finance is not just no more a debit credit job. So it's much more than this, because now these are the things that can easily be done by the machine. So we have to be something that if company wants to hire you, so you with the accounting and finance knowledge, you I think needs to possess something else also in order for them to be strong candidate in order to avail that position. सो इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जैसी बात है, अब तो कोई खाता नहीं होता या किताबें नहीं होती जिसपे वो डेबिट क्रेडिट हो, जिस तरह कि आपने सही कहा. व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर नाउ आर अवेलेबल टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो कि आपको सीखने पड़ते हैं? और आई एम श्योर कि ये मैं कोमल आपसे भी सवाल पूछूंगा बिकॉज आप शेल में और यू आर इन आइकिया, बोथ आर टॉप मल्टीनेशनल ऑफ द वर्ल्ड, right? What is the software being used commonly throughout the world in accounting and finance? मैं अगर सच बताऊं तो जिस तरह से दुनिया इवॉल्व हो रही है ना, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर भी उसी तरीके से इवॉल्व होते रहते हैं. सो इट्स लाइक sometimes they feel this is the best software and this is something to be used, and within a year or within 2 years they are like, no, this an upgrade has been available from this to this, and then we need to move from something else to something else. So but I think nowadays it's more preference on SAP to be used as an accounting software, and if you want to analyze those accounting details and everything, then Power BI is being used. If you say about what's Absolutely. I being think I was expecting the same answer. कोमल, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? नहीं, मैं एग्जैक्टली जो सैर ने भी कहा कि बिकॉज हम भी ऑल्सो यूज सैप और पावर बीआई का रोल, क्योंकि जब मैं पीडब्ल्यूसी में थी वहाँ तो कंसल्टेंट रोल था, तो वहाँ पे इस तरह की एप्लीकेशंस यूज नहीं होती. Lekin when I came into industry, I saw that even the finance people need to actually learn about these applications themselves. क्योंकि इतनी calculations दराज में इतनी हमारी transactions होती थी, calculations करना इतना important था, इतनी wide calculations होती, you cannot do it on Excel files. The Power BI is a very, very good tool that one can learn. And if you're learning with your qualification during your articles, or even if you are in class 9, 10 or 12, अगर आपके पास ये IT applications की knowledge होती है, it give you a very competitive edge when you're entering into an industry role, even in the firms. So अगर आपने सीखा हुआ होगा तो it will be very, very better for you.
if I'm concerned, I was a person never liked IT. तो I regret myself not having it at the earlier stage, क्योंकि लगता था कि हमने qualification ले ली तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की जमाने के अंदर if you're not competitive with the IT systems तो काफी challenge होता है. Being an IT professional head of tax, need to understand what kind of configuration in the system in SAP, IT के लेके कौन सी configuration, क्या coding होती है. I did that in Daraz too and I'm doing in Shell too. तो आपको वो knowledge अगर होती पहले से तो it will be an advantage for you in the field. Right. So definitely one तो should ऐसा भी never so ऐसा भी होता होगा कि कोई नया सॉफ्टवेयर आया है मार्केट में, लाइक ओरेकल फाइनेंशियल्स है, तो खैर इट्स नॉट दैट न्यू, बट एसएपी, ओरेकल फाइनेंशियल्स या माइक्रोसॉफ्ट की कोई है, जिस तरह आपने पावर बीआई का भी जिक्र किया, तो ऐसा भी होता होगा कि कोई आईटी डिपार्टमेंट के पास आप जाते होंगे कि मैं अभी ये काम अभी कर रही हूँ एज एन अकाउंटेंट, टैक्स अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको Automate. टेक्नोलॉजी के थ्रू करूँ, तो वो आपसे ही पूछते होंगे कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं क्या है Yes. है ना, और फिर वो आपको सॉफ्टवेयर बताते होंगे कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर है, इसका वेंडर ये है, वेदर इट्स ओरेकल, वेदर इट्स माइक्रोसॉफ्ट, वेदर इट्स एसएपी, तो वो उन रिक्वायरमेंट्स को लिखने के लिए यू वुड हैव टू हैव ऑल दोज नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट, क्योंकि सैप का भी जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल का मॉड्यूल है वो आसान नहीं है, इट्स लाइक सो मेनी स्क्रीन एंड सो मेनी फील्ड्स, तो उसको भी सीखने के लिए एक अलग ही आपको सर्टिफिकेशन शायद रिक्वायर्ड होनी चाहिए अब. ओके, exactly. मूविंग ऑन, आई थिंक ये सवाल तो बहुत ज्यादा आएगा कोमल, जिसमें हम बात करेंगे करंट जॉब मार्केट की, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान में तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप जिससे भी बात करें, चाहे वो बाल काटने वाला नाई हो, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या वो किसी मार्केटिंग हेड हो, एवरीबडी वांट्स टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान. It's a phenomena. It's something like a dream for people. It's also about money. कि भाई बाहर निकलना है, ठीक है, दूर के डोल सुहाने भी होते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक इज द मार्केट राइट नाउ इन पाकिस्तान? अगर मैं बात करूं, स्टिल इज इट देयर अ बिग मार्केट फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स? On a very serious note, yes, it is. अभी आजकल के हालात में, as you mentioned, people are moving out of Pakistan. It's a big challenge for a company like Shell as well to retain people, a good people resource. और फिर जब ढूंढने निकलते हैं तो मिलती भी नहीं है. तो अब नहीं मिलते लोग, इसका मतलब है कि मार्केट तो ओपन है, स्पेस तो है. They are just looking for the right people. अब वो राइट पर्सन आपने कैसे बनना है? यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज, कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन. एक जमाना था जब हमने स्टार्ट किया तो हमने सुना था कि जो इंटरमीडिएट भी पास होते थे सीए में, दे काइंड ऑफ गेट अ वेरी गुड पेड जॉब. पर अब ऐसा नहीं है. मार्केट इज बीइंग वेरी कॉम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ दिस अदर क्वालिफिकेशन, एसीसीए से इन सब की वजह से मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है. आपको सेम काम करने के लिए एसीसी भी मिल जाएगा, सिमा भी मिल जाएगा, सीएफई मिल जाएगा. पहले सिर्फ सीए होता था, वो भी अगर इंटरमीडिएट पास होता तब भी आपको नौकरी मिल जाती थी. अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्वालिफिकेशन नहीं है. ऑनेस्टली I'm very concerned by saying that कि अब लोग ढूंढते हैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो जो एमएनसीज होती हैं मोस्टली वो आपको इंडक्ट नहीं कर रही होती है. सो यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपकी ट्राई होना चाहिए कि गेट योर क्वालिफिकेशन फर्स्ट. जितना भी टाइम लगे, फोकस ऑन योर स्टडीज, गेट द क्वालिफिकेशन. कुछ कंपनीज ले लेती हैं ऑन बोर्ड, लेकिन फिर उसकी कंडीशन ये होती है कि यू टेंड टू कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन विद इन सर्टेन ईयर्स. तो अगर 4-5 साल में आपने सीए लग के कंप्लीट किया है और आर्टिकलशिप भी की है 2-3 साल, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में अभी भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत मौजूद है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बल्कि ज्यादा जरूरत हो गई बिकॉज लोग ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा है? एग्जैक्टली. और आईकैप खुद ये कहता है कि जितने आज तक इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, उस तरह सप्लाई नहीं है. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. That's why they tend to pass people as much as they can according to the boundaries they have. जो क्राइटेरिया होता है उसमें रहते हुए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि लोग पास हो जाए. आईकेप की जरा ये कोशिश नहीं होती है कि वो लोगों को पास ना करें, क्योंकि उनकी खुद की रिक्वायरमेंट ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान. एंड नॉट जस्ट बिकॉज इन पाकिस्तान दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ डिमांड इन मिडिल ईस्ट, यूके एंड इन अदर कंट्रीज एज वेल. क्योंकि अगर आप देखें मिडिल ईस्ट एज वेल, आपको इंडियन ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर क्वालिटी की बात आती है तो दे पीपल प्रेफर पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. Anytime, anytime. I think what Indians have done is they made their mark in technology more than anything.
और मैंने जो देखा है in the last 15 years in the GCC, in whether it's UAE, whether it's Qatar or Saudi Arabia, I think Pakistani finance professionals बहुत top तक जाते हैं. They stay there for a long time. They're trustworthy, and they have a long career. So Seher, question to you, because you working in IKEA Sweden, all right, and Sweden is not a country where many Pakistanis end up. Mhm. What do you think now? यूरोप की तरफ क्या हालात हैं मार्केट के from an accounting and finance professional perspective? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यूरोप में नहीं होंगी, स्पेशली स्वीडन में स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ की एक अपनी लैंग्वेज है। और अगर आपको स्पेशली फाइनेंस की ही फील्ड में जाना है तो आपको वहाँ की लैंग्वेज पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के एवरीथिंग लॉज एंड एवरीथिंग जो है वो स्वीडिश लैंग्वेज में लिखे होंगे. बट Oh, really? यस, एंड I'm इवन sure फॉर you're facing the same problem. yes, but being a chartered accountant, since इतने सारी आपके पास options open हो जाते हैं कि आप जो है वो फिर किसी भी फील्ड में जा सकते हो. सो बिजनेस परफॉर्मेंस एनालिस्ट में जाना इसीलिए ही मेन था, क्योंकि वहाँ पे भी फाइनेंस एक हमेशा प्लस माना जाता है. और अगर आपके पास दूसरी नॉलेज है और दूसरे आईटी में सीख के आप कुछ कर सकते हो, तो मतलब आपका ये नहीं होगा कि आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, because you have the finance knowledge, so you will get on something. But of course it will not be the accounting finance, but it will be mainly of your management accounting things on which you can excel now. So I mean, being अगर आप पाकिस्तान से फाइनेंस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जरूर अच्छे से अपना क्वालिटी लाइफ गुजार सकते हो, ऐसा आई वुड थिंक. इवन So, दो ये स्वीडन स्वीडिश लैंग्वेज पे मेन बेस्ड है, बट स्टिल you can find a so job. Europe doesn't have as many opportunities and other markets like the GCC market and the US market. No, for I mean, for certifications, they usually don't consider much. I mean, in the big European countries, they might, but the country in which I am, it's, I mean, they would prefer most of their own qualifications and own degrees that they are producing. So, and What are since those? Can you name one or two I of the mean, certifications? these are the master's degree which their universities provide. So. Right. And they open up the opportunities for Pakistani students also, that they can apply for their education for education from Sweden. Hmm. But because I mean, even for AKEB'P, it's like they didn't recognize these qualifications, because for AKEB'P, their main members are sitting in Canada, Australia, like these countries. So they are usually connected with those chartered accountancy main institutions, and not with I mean, if you see the MOU that ICAP signed with these countries, it's not including European countries. It's mainly sometimes UK, yes, and Canada, Australia. So these countries where the immigration is much more easier. So they are targeting those countries to have some MOU signed, let them read what is in the education syllabus and everything, so that they can give the exemptions. But when it comes to European countries, they are not very sure that yes, that the ICAP is providing the education which they needed. So Let's talk about career progressions here. You've been down this field, what, more than 10 years now? 5 years. Okay, 5 years. So, what do you think now in terms of career progression? What else can you do, and how do you advance in this career? मतलब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए. Now you're doing the same thing every day. How do you get ahead? Promotions भी होती हैं. क्या देखा जाता है उस वक्त जब promotions हो रही होती हैं? किस तरह होती है career progression इस field? I think career progressions first आपको ये एनालाइज करके होती है कि पूरी जिंदगी हमें कुछ ना कुछ लर्न करना है. सो इट कांट बी लाइक कि आप हमेशा जो है ना वो फुल उसमें जा रहे हो. इवन फाइनेंस के हो, इंजीनियरिंग थोड़ी लर्न करनी है, कोडिंग थोड़ी लर्न करनी है, बिजनेस की नॉलेज थोड़ी लर्न करनी है. सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड एंड यू हैव टू फील पॉजिटिव
that yes, I have the capability, I have the skills, I need to polish them and gain some knowledge, because entering some big organizations is a challenge itself. So Yeah. if you seek that challenge, then this is how you need to develop yourself. So I mean, even if you done CA, and now the research is very important, so I mean, just don't stop your education at any point in time. Just learn and learn, so that you can Okay, ex Komal, this question is for you. Typical work-life balance. हर जिस जो जो भी आपकी फील्ड हो उसमें ये कहा जाता है कि जब क्लोजिंग होती है तो अकाउंटेंट्स तो पूरी पूरी रात जागते हैं. Is it still true? I think so, yeah. It also depends on the culture you're working in, the company you're working in. But normally ये थोड़ा सा मैटर ही ऐसा है, सब्जेक्ट ही ऐसा है कि क्लोजिंग के आपके पास प्रेशर्स होते हैं. So I've seen some kind of pressures in Daraz as well. Though I'm not in a finance core finance team in Shell, पर यहाँ पे जब क्लोजिंग होती है तो प्रेशर तो डेवलप होता है. And that's where the work-life balance needs to be considered on personal level. कोई आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट नहीं करेगा. यू नीड टू क्रिएट दैट फॉर योरसेल्फ. घर 5-6 बजे पहुंच जाना इट्स नॉट वर्क लाइफ बैलेंस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब भी आप लेडर अप करते हैं, जैसे आपने भी पूछा शहर से, करियर प्रोग्रेशन में आपको क्या कंसिडर करना चाहिए, तो आपकी पढ़ाई, आपकी जो थियोरेटिकल नॉलेज होती है या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, एक टाइम तक काम आती है. व्हेन यू मेकिंग योर लेडर अप इन योर करियर, लीडरशिप रोल के अंदर आती है, यू काइंड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर. और उस वक्त आपको नंबर क्रंचिंग, फील्ड वर्क में ज्यादा काम नहीं करना होता. देन यू नीड टू हैव लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स. इस पे भी आपको पॉलिश करते रहना होता है टाइम टू टाइम. तो कुछ टाइम ऐसे आते हैं, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन योर वर्क, देन टेक सम ऑफ आफ्टर द प्रेशर वर्क. तो इस तरह से आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना होता है विद योर फैमिलीज. ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज 5-6 बजे घर पहुंच जाए. देयर आर टाइम्स जब आप जल्दी ही पहुंचेंगे, देयर आर टाइम्स जब आपको लेट भी होगा. एंड ट्राइंग टू मैनेज योर वर्क विद इन 5 days so that you have 2 days weekend with your families. So I personally think one need to maintain that balance themselves. कंपनी क्रिएट नहीं करेगी, कोई आपका पीयर आपके लिए मेंटेन नहीं करेगा उसको. बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपने तो काफी मल्टीनेशनल में काम किया है, सेम विद शहर. लेकिन जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सेठिया कल्चर होता है, मेरे ख्याल है फाइनेंस वालों को यही कहा जाता है और दूसरे बैंकर्स, इन दोनों को कहा जाता है कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाता है. बट आई ऑल्सो अग्री विथ यू दैट नाउ दैट रिमोट वर्क एंड वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज आर स्टिल अवेलेबल. और हर चीज में टेक्नोलॉजी इतने गहरे तरीके से आ गई है कि अब जो काम आप फाइनेंस में या टैक्स अकाउंटेंसी में बहुत ही टाइम लगा करता था, अब शायद एक क्लिक करने पे वो पूरा आपको टैक्स की रिपोर्टिंग हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट करना हो, चाहे वो बोर्ड को रिपोर्ट करना हो. हाँ, प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती हैं, आई एम प्रीटी श्योर. वो अभी तक उसके कोई ऑटोमेटिक तरीका इजाद नहीं हुई है. आई होप चैट जीपीटी और ओपन एआई इस पे काम करे कि अब प्रेजेंटेशंस भी ऑटोमेटिक बन जाए, यानी कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो प्रेजेंटेशन भी बना रहा हूँ साथ साथ. वो दिन दूर नहीं है. एक्चुअली आई हैव सीन दैट. वो दिन दूर नहीं है कि एक्सेल अगर आप एक दे दें सिर्फ उसको, एक ये मेरी एक्सेल एंड यू टेक केयर ऑफ पावर पॉइंट फॉर द मैनेजमेंट, वो आई थिंक दैट देयर आर सॉफ्टवेयर व्हिच कैन डू दैट. तो इन इस सिनेरियो को लेकर तो मेरा ख्याल है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपने बिल्कुल सही कहा, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है अब. क्योंकि योर मैनेजर, your CFO is trusting you that you will deliver a certain report, a certain calculation, a certain number by this time. And if you can do that earlier, why not? Then you can go home and have fun with your kids. नहीं, मैंने ऐसा भी देखा है, लोग काम हो जाता है फिर भी दे प्रेफर टू स्टे विद देयर पीयर्स. एंड दैट्स योर पर्सनल चॉइस. दैट्स यू कैन नॉट ब्लेम ऑन योर कंपनी कल्चर एंड देन से दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट देयर. सो यू नीड टू हैव सम चॉइसेस. कहीं जनरली भी होता होगा, आई एम नॉट डिसएग्री टू दैट, कहीं कहीं होता है जनरली. लेकिन ये तरह की सिचुएशन ज्यादा होती है. हमने आर्टिकल्स में भी बहुत फेस किया है इसको, कि वी टेंड टू स्टे ऑन द क्लाइंट्स बिकॉज योर पीयर्स आर देयर. यू नीड टू मेक एन इंप्रेशन. दैट्स योर पर्सनल चॉइस. सो वर्क And what लाइफ बैलेंस about खुद मेंटेन किया जा सकता है. organizations in Pakistan now have, I mean, Shell की बात नहीं कर रहा. I know about Shell. It's a very multinational and very global organization जहाँ पर remote culture है और work from home है. Other organizations के बारे में आपका क्या ख्याल है? Are they providing remote work possibilities for finance managers?
आई थिंक अभी काफी चेंज हुआ है, नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट वी शुड एक्सपेक्ट। जो पीयर्स से, जो कोलीग से, अपने फ्रेंड्स सुनने को मिलता है कि आफ्टर कोविड स्पेशली, क्योंकि पहले तो वो अवेयरनेस ही नहीं थी ना कि काम घर से हो सकता है। सो नाउ सम हम्म। कंपनीज डू ऑफर वर्क फ्रॉम होम, 2 दिन 3 दिन घर से काम कर लें, 2 दिन फिजिकल आ जाए। कुछ कंपनीज ने तो बाकायदा ऑफिस अपने क्लोजर पे कर दिए हैं कि भाई वो कॉस्ट ही ना बेयर करनी पड़े, लोग घर में काम करें, उनको फैसिलिटेट किया है, अलाउंसेस दिए हैं कि आप घर से ही काम करें। तो दैट्स काइंड ऑफ सिचुएशन एंड फ्लेक्सिबिलिटीज आर देयर इन द इंडस्ट्री नाउ आफ्टर कोविड। पहले तो नहीं थी, लेकिन कुछ कंपनीज अभी भी हैं जो दे स्टिक टू अ फिजिकल एनवायरनमेंट, दे फील कंफर्टेबल। जैसे आपने मेंशन किया, कुछ सिटिया कंपनी होती है तो वहां हो सकता है कि एनवायरनमेंट अभी भी मौजूद हो, बट जनरली देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी नाउ इवन इन फाइनेंस। Okay, great. Sahar, would you like to tell us about, because you've worked in other countries as well, what do you think about the workplace culture now in the companies that you have been part of in other countries? It's a very open culture here. So, I mean, the managers and the top management will not be going to sit in a separate room or like this. So, there it's very open. So, even the MD of the company will be sitting next to you. So, even though it's the multinationals and they are so big personalities for us, but yeah, even then they will be with you and I will be treated like everything else. No peons, nothing. You have to do it everything yourself. So, it's Really? yes, so it's something that and they want every child to be independent from their early age, and thus they want us to be independent and do not rely on any peons on everything. So everything needs to be done by. And for women, is it a very good workplace in terms of balancing your life with your family? Yes. Yes, of course. There is no discrimination here also between men and women more. I haven't seen such differences. So even here, it's a father who takes the parental leaves and everything for the child, and so everybody is considered to be have same rights and being here, it's like having the equal opportunity to say in the meetings also with the top management. So you feel like that. You are inclusive and you are not considered as you are from any other country or and like this. So they have a very open culture and very inclusive that they will include you in based on your Komal, what qualification. about Shell Pakistan? It's completely the same as Sarah mentioned, but it's a one of its own kind because having a multinational culture. But generally, I think all other Pakistani companies should really need to learn a lot from European and culture outside Pakistan. But at Shell, we अच्छा have the सर, same एक culture. थैंक यू, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल होगा. व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल, अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकें इन अ कंपनी? जॉब डिस्क्रिप्शन यूजुअली मंथली एनुअल क्लोजिंग इसके नाम से आती है, फोरकास्टिंग उसके नाम से हम्म. आती है, फोरकास्ट एंड बजट्स में वेरिएंसेस के नाम से आती हैं. से हम्म. उन वेरिएंस एनालिसिस करना या फिर फोरकास्ट में क्यों जो है वो हम ज्यादा ऊपर हो रहे हैं उसके बारे में बताना. यूजुअली इसी सो तरीके से बजटिंग रिपोर्टिंग इज वेल. या बजटिंग So फोरकास्टिंग. it's basically regulator reporting, financial reporting, reporting to the board, number crunching, how much is the profit, how much is the cash flow management, cash flow statements कैसे बनाते हैं, income statements वगैरह, ये सब everything is inclusive. ये हमेशा नहीं होती बट ज्यादातर दे आर इंक्लूडेड. बट यूजुअली मंथली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग ये नाम जरूर होते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन में कैश फ्लो बनाया जाए या प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर आती है तो जस्ट मंथली क्लोजिंग शामिल होती है बट इसमें everything is not included. Some people would only be responsible for some profit and loss items, even not for the whole profit and loss items, and some are responsible just for the reconciliation. So they are so being divided. राइट. कोमल, मुझे कुछ रोल्स के बताएंगे कि कौन से रोल्स अवेलेबल होते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में? लाइक जिस तरह आपने कहा था यू आर अ टैक्स अकाउंटेंट, राइट? तो अगर सीएफओ को रिपोर्टिंग पे कितने सेक्शंस होते हैं, क्या क्या रोल्स अवेलेबल होते हैं इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस?
सो जनरली कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे सर ने मेंशन किया। एक बहुत ही बेसिक रोल होता है फाइनेंशियल कंट्रोलर का। वो कंट्रोल ऑल द कॉस्ट सेंटर्स ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर आपकी कंपनी के जितने भी कॉस्ट सेंटर्स होते हैं उसको कंट्रोल, उसके फाइनेंस कंट्रोलर के हेड में आता है। कुछ जगहों पे फाइनेंस कंट्रोलर के अंदर ट्रेजरी भी आ जाता है। सो ट्रेजरी इज द वन पार्ट विच इज ऑल्सो रिपोर्ट्स टू द फाइनेंस लीड इन द कंपनी। फिर जो ट्रेजरी के अंदर कैश मैनेजमेंट, जैसे आप बात कर रहे थे, बैंकिंग रिलेशनशिप सारा ट्रेजरी के अंदर आ जाता है। देन वी हैव अ बजटिंग एंड रिपोर्टिंग। जनरली बजट एंड रिपोर्टिंग साथ ही रखा जाता है कंपनी के अंदर। पाकिस्तान का सेटअप थोड़ा कम है, बाहर कंपनीज में सेपरेट भी हो सकता है। तो बजटिंग भी करनी होती है साल के अंदर। फिर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम होता है। कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल, उसके अंदर कंप्लाइंसेस होती हैं आपकी। जो लिस्टेड कंपनी होती है उनकी सेपरेट होती है। जो नॉन लिस्टेड कंपनी होती है उनके अदर रेगुलेशन उसको मीट करना होता है। तो यू नीड एन एक्सपर्ट फॉर दैट। उसके अलावा आपके पास एनालिसिस होते हैं, जैसे सहर ने मेंशन किया। फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं कंपनी के अंदर, जो फाइनेंस, जैसे हमारे लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को एनालिसिस करने के लिए वो चीजें होती हैं। इसके अलावा आपके पास फाइनेंस की रिपोर्टिंग के अंदर एक नया चीज है जो फाइनेंस एंड बिजनेस के नाम से होता है, कि वो फाइनेंस भी होता है और बिजनेस भी होता है। दे नीड टू पार्टनर देमसेल्फ विद द बिजनेसेस। जैसे अगर मैं अभी शेल की कंपनी की बात करूँ तो वी हैव अ लुब्रिकेंट बिजनेस, वी हैव अ रिटेल बिजनेस। हमारा एक फाइनेंस फोकल होगा जो लुब्रिकेंट बिजनेस को सपोर्ट कर रहा होगा, एक फाइनेंस फोकल होगा जो रिटेल के बिजनेस को कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा। तो उसको फाइनेंस एंड बिजनेस बोलते हैं। देन यू हैव टैक्स। देन अंडर टैक्स यू हैव बोथ रोल्स। अंदर कंसल्टेंसी भी आता है, इसके अंदर टैक्स अकाउंटिंग भी आता है, टैक्स एडवाइजरी भी आता है। उसके अंदर भी दो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एंड देयर आर अदर टैक्सेस एंड लेवीज। तो टैक्स इटसेल्फ इज अ सेपरेट स्ट्रीम, जहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है to learn, and you can specialize in each discipline itself in under taxation. Transfer pricing, अब जैसे बहुत सारी एमएनसीज होती है उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के भी रोल्स होते हैं, वो भी टैक्स के अंदर आ जाते हैं। तो यू हैव अ लॉट टू डू इन फाइनेंस फील्ड इटसेल्फ। राइट। सो ये एक सवाल एक आया है कि क्या इंटरमीडिएट के दौरान ही स्टार्ट किया जा सकता है, यानी इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट होता है ये सीए का जो पाथवे है? इंटरमीडिएट के मतलब रिजल्ट आने से पहले स्टार्ट हो सकता है, पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, बट राइट। उसके मतलब पेपर देने के लिए यू हैव टू बी इंटरमीडिएट एटलीस्ट। एक आई सवाल डोंट नो, आप लोग। हमारे जमाने में तो कैट होता था कि एक और स्ट्रीम बनाई गई थी उस टाइम पे। आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल एप्लीकेबल, बट यू कैन ऑलवेज रिसर्च ऑन दैट। कि लोग मैट्रिक करके कैट करते थे, वो जरा कम टेन्योर होता था, एंड देन दे डायरेक्टली गो इनटू सीए फाउंडेशन। तो आई एम नॉट श्योर Right, इफ right. इट्स स्टिल अवेलेबल। Certified, yeah, yeah. CAT was a foundation years. I remember that too. एक सवाल, आखिरी सवाल, आप लोग दोनों से क्या एडवाइस आप देंगे इंडिविजुअली, starting from Zahir, what would be the advice that you give to the students who want to start going into that field, who are wanting to go into the field? क्या करना चाहिए उनको आज से, यानी कि अगर मैं ग्रेड 9th में हूँ, what would I do if I want to go into finance? आई वुड से कि अगेन थिंक करें, वापस सोचें कि क्यों आना है इस फील्ड में, एंड इफ यू आर एक्चुअली डिटरमाइंड दैट यू वांट टू बी इन दिस फील्ड, नॉट बिकॉज के मेरे कजन ने किया हुआ था तो मुझे भी यही चीज़ फॉलो करनी है, बट इट्स बिकॉज या मेरे घर वाले जो है वो उसको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं तो मुझे उनके लिए ये करना है। नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बट बिकॉज कि आपको जो है वो इसमें एक्चुअल में इंटरेस्ट है, सो गो फॉर दैट। एंड यस, अगर आप का खुद का दिल होता है ये करने का कि आपको लगता है कि आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं एंड अपने लिए और बिजनेस के लिए और किसी के लिए ग्रोथ का बाइस बन सकते हैं, सो यस, गो फॉर इट। मतलब एनालाइज करें कि आपका रीजन क्या है टू डू और टू परस्यू एनी फाइनेंस क्वालिफिकेशन, बिकॉज देन यू कैन only work for that. Otherwise, if you go for it but you do not have your heart in it, then at some point in time it will not work for you. And sometimes also the CA results, it's not giving you the best. So just That's have a very good advice. determination that yes, if you want to do it, then I mean everybody can do this CA. It's not that difficult, but it's just that you wish to do it, not because everybody has done it and there are some other pursuants also, but it's just that you want to do it. So then I think Excellent advice. Komal, same question for you. I think first of all, the students of the age who are studying class 8, 9 now, rightly, immediately they need to learn, जैसे सर ने mention किया कि आपका passion, आपका interest किस तरफ है. It is true not just for finance,
अदर फील्ड्स के लिए भी कि अगर आपका पैशन जिसके अंदर है आप उसको परस्यू करेंगे तो यू गेट अ राइट रिजल्ट्स, अगर नहीं है तो फिर यही होगा कि यू एंड अप फेलिंग सी एग्जामिनेशन देन ब्लेमिंग अदर्स कि या तो मुझे फेल कर दिया या फिर बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता तो मैं भी नहीं कर सकता। इट्स जस्ट बिकॉज यू नीड टू हैव अ राइट स्टार्टिंग पॉइंट। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट सही है तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। आपके सामने एग्जांपल्स बैठे हुए, देयर आर मेनी मेनी मोर इन द इंडस्ट्री एंड इन द फील्ड। यू कैन लिंक्डइन आजकल हर किसी के पास अवेलेबल है। आई सी people connecting to me at a very stage of matriculation or intermediate, A levels, O levels, जो कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो this is a good for professionals as well to connect with them and tell them, advise them how to go with it. आप एग्जाम उनसे एडवाइस लें, अपने पीयर कोलीग्स से लें, कम्युनिटी लेवल पे आप बातचीत करें। हमारे तो कितनी कनेक्टेड कम्युनिटी है, आपको हर अपनी कम्युनिटी के अंदर बंदा मिल जाएगा आपको एडवाइस करने के लिए। उनसे कनेक्टेड रहें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाएं लोगों के दरमियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फील्ड। इनफैक्ट आजकल पर्सनल ब्रांडिंग की बहुत जरूरत होती है, तो नेटवर्किंग बहुत जरूरत है। 8-9 से ही सीखें नेटवर्किंग कैसे करनी चाहिए, एंड आई थिंक यू विल गो विद इट इंशाल्लाह। आई थिंक नेटवर्किंग के बारे में मेरा सिर्फ एक ये कमेंट है, जो आपने बात की बिल्कुल सही है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, स्पेशली लिंक्डइन, राइट? लेकिन जब सिर्फ उस वक्त लोग नेटवर्किंग करते हैं जब जॉब चाहिए होती है। उसके अलावा आई कोई थिंक किसी से, अवेयरनेस बढ़ रही है। आई हैव हाँ, I've seen people connecting to me from O levels, A levels वाले लोग भी आते हैं कनेक्ट करने के लिए, and then tend to learn about some people. तो आई थिंक प्रोफेशनल्स को भी थोड़ा सा यहाँ पर ओपन होना चाहिए। मैंने भी देखा है लोग जो है ना उनको एक्सेप्ट नहीं करते कनेक्शंस को, जहाँ से फायदा मिल रहा होता है उन्हीं को एक्सेप्ट कर रहे ऐसा ही होते है, ऐसा ही हैं। है। वी नीड वो टू यही देख रहे होते आइडेंटिफाई हैं कि ये दैट टैलेंट। कितना बड़ा ये सीएफओ है, ये सीईओ है, या कोई बड़ा प्रोफेशनल है जिसको मैं ऐड करूं। अदरवाइज यस, आई मीन इट कैन बी यूज्ड बोथ वेज, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज आल्सो, वेंडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको तंग करते रहते हैं लिंक्डइन पर बार बार। अगर आप टैक्स अकाउंटेंट हैं तो 50 आपको मैसेजेस भेज रहे होते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आ गया, वो सॉफ्टवेयर आ गया। इसके अलावा यस, आई थिंक स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं, ये अच्छी बात है। प्रोफेशनल्स लाइक यू एंड सहर डेफिनेटली शुड ऑल्सो कम अप कि ठीक है, जैसे आपने इतना अच्छा हमें आज के वेबिनार में आपने हमारे साथ ताउन किया और यू गाइस स्पोक अबाउट इट, इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू वेरी वेरी मच। इसी तरह से और लोगों को भी आगे आना चाहिए, चाहे वो वेबिनार हो, चाहे लिंक्डइन पे किसी को गाइड कर सकते हो, बट यू कैन जस्ट डू अ स्मॉल बिट ऑफ वॉलंटरी सर्विसेज, जो कि हमारे तरीके में तो ऑलरेडी है। So that's about it from my side. Thank you very, I very think, much. Imran, Ji. there's one more point it came to click to my mind. I did myself, it was very great for me. It was a great learning experience. 9, 10, O levels, A levels में तो उस टाइम पे काफी encourage किया जाता था। जब आपकी summer vacations होती हैं, tend to have some internships, 2 weeks, 3 weeks, ताकि आपको पता चले कि अगर आपका banking sector में तो बैंक में करें, किसी company में है तो company में करें, small organization and NGOs, कहीं भी करें to test that knowledge कि is it working for you or not. तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि दैट्स द राइट फील्ड फॉर यू और नॉट। Absolutely right. I think आपने बहुत पते की बात की है। ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इंटरमीडिएट, जहां भी आपको मौका मिले आप इंटर्नशिप्स करते रहें, ताकि आपको पता चल जाए कि आर यू रियली, जिस तरह कहते हैं ना, आर यू टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, कि आप कोडिंग कर सकते हैं, आर यू अकाउंटिंग प्रोफेशनल, आप टैक्स प्रोफेशनल हैं। ये चीजें अगर आपको पता चल जाए पहले से कि अच्छा है कि किसमें आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, सो दैट यू डोंट गो टू फार अवे 5 साल के बाद into the finance and accounting profession, then you realize कि मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा, I'm a business person, I'm a marketing person, I'm a technology person। तो ये चीज जल्दी पता चल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। So with that note, I will thank you guys again, Komal and Seher, for taking out your time, from the bottom of our heart, and thank you very much from the Aga Khan Education Board for Pakistan's platform. We hope that you will stay connected with this community and provide more services in the future. थैंक यू। Take care, Ji.